morning, everyone. Morning, sir. So shall we begin? Because people are yet to join. Sir, I have put up a message on the group, so maybe they will join. Okay. But I think this app gives you notification if the class is starting. Because every time, whenever it is scheduled, it's been on the timetable, weekly timetable. So you don't have to give the link every time whenever the class starts. I don't have to even, message them, because if you have this app on your mobile, you will automatically get a notification that class is starting in 10 minutes or whatever. So well, so now you are in 5th semester, and I think आप लोग रिजल्ट्स आ गए हैं 4th सेम के? Yes, sir. Fourth sem के, so third sem के आए, fourth के नहीं. 4th के आने के हैं ना? ओके, 3rd के तो आ गए हैं. 3rd कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, मार्च अप्रैल में. April. एंड और अभी आपके 4th सेम के एग्जाम्स हुए थे. The results are yet to come. Yes, sir. They are yet to come. 6th semester result have been released. 4th semester results are yet to come. Yeah, because 6th sem students are the outgoing students, so their results usually come early, and yours are held back. The second semester वालों के, sorry, second year वालों के, यानी कि 3rd and 4th semester वालों के थोड़े डिले होते हैं, because they have been, उनको तो भी कंटिन्यू करना है, ऐसा है. Anyways, so like I'll be like sharing a few files now. One is the usual syllabus, what we, I think we all have that copy of that syllabus, and there was a revised syllabus also. There'll be a file which would tell you the revised, the rectified or the modified syllabus, the points which have been modified in the syllabus. Given that file, I'll share. Let me start with the sharing first. Share the file. And tell me whether you all can see it or not. I need to go to the desktop. Syllabus. Okay. Can you all see the file? Yes, sir. Okay. It's not loading there. It's loading, I suppose. The second page. Yours is the 5th semester. We need to go to the page where the 5th semester syllabus is there. I'll be covering the first 2 units of this particular paper, that is paper 1 of 5th semester. So 5th semester practicals में आ गए. Let me go back. Forward. This is that portion, right? The first one is enzymes and the second one is, सबको दिख रहा है नहीं? Yes, sir. Okay, these 2 units I'll be taking, and मैं आप लोग को रिवाइज्ड वाला पोर्शन भी आप लोग को ऐड करता हूँ, बिकॉज शायद एंजाइम्स में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं. तो ये फाइल आपको मैं स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? देयर यू ऑल कैन सी इट. एंड एक बात बताइए मुझे,
ये जो 2 यूनिट हैं, आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे, तो मुझे बताइए anybody of you is interested in presenting any of the topics? सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे एक पोल सिस्टम है, ठीक है। पोल सिस्टम में यूनिट 2 okay, create the system, launch. एक पोल लॉन्च हुआ, आप लोगों को दिख रहा है? Can you all see it? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, किसने पोल नहीं किया? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आवाज। तो वो पोल दिखा आप लोग को? पोल मतलब आपको वोट करना है। यस सर। So when तो उसमें से किस the poll option opened and the screen freeze and and I can't see the I couldn't see the poll option in my near my chat option. okay, is it so? Because there should be a like one the question will be displayed and then the options will also come along. Yes, so that did not happen. I could only see the poll on the screen that you were showing. Not answered, it's been said. Let me check. Okay, it was for the shorter duration, that's why. I'll give another 1 minute, okay, and go for the poll.
Okay, I'm giving it for another 1 minute. Do the polling. Okay, correct answer. There's launch. I think it's visible now. I think now it's visible. So you all are giving now. I can see the responses. It will run for 1 minute and then it will stop. Seven out of 11 have answered. You need to answer any one of the options, A, B. Next time onwards, I would put another option that's called not sure. The last 5 seconds. It's over. Okay. So I have received few responses. 8 people have said that they have responded, and 3 have said that they are interested in class seminar. I think their names have been Mahima, Sneha, and Rupa. Okay, why the rest not interested? Rest are not interested. आ रही मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. ओके ये जो 3 जिन्होंने पोल किया था कि वो इंटरेस्टेड हैं सेमिनार देने के लिए, they can choose their own topics from these 2 units. ठीक है, कोई भी छोटा सा पोर्शन भी ले सकते हैं, not the whole topic need to be presented. A small portion of that, any of the topics can be taken as their presentation point, and they can prepare presentation. अभी पूरा ये महीना पूरा रहेगा. We'll be doing this in the month of October. Apart from this polling system, if at all anybody else is also interested in presenting a class seminar, even he or she can also participate by giving a SMS. Like, you know, we have a chat section in our app. You have to give your name and the topic in which you are going to present. Don't make a big presentation, because your presentation is not the class discussion of that particular topic. It is a process by which you would get to know how to do a presentation. And if at all you have some fear in presenting in front of all, even that fear would go off. So to improve that only, we are going for the class seminars. Not that the topic you would select will not be taken consideration for the teaching purpose in the classes. Okay, don't worry about that. Any smaller topic, even the 5 slides, 4 slides, 3 slides, 10 slides, whatever type of content you have, you need to you can come up with your presentation. The presentations will be analyzed, assessed, and you'll be told what is the right method to do it. If at all some lacunae are there, if at all some drawbacks, some demerits are there with your presentation, those will be considered, those will be discussed. And do not take it otherwise, that if something is discussed about your presentation in the class, that doesn't mean that you have been, humiliated or you've been insulted in the class. Don't take it otherwise. You take it as if you have been corrected and you have been given improvisation tips or the hints by which you can improve your presentation in the next time or in the future time whenever you are needed to give your presentations.
Okay. Anyways, so these are the two topics which these are the two units which I would be covering for your presentation for my classes. That portion of the syllabus which I would take up. Okay. Now I will share another file which says the you know the revised points of the syllabus. Revised points of the syllabus. It's being shared now. I think you all can see it. Can you all see it on the screen? Yes, sir. So these are the rectified points or the corrected or the modified points. This is BSc semester 1. We'll go to the next page. This is also for the semester 1 only. Paper 3 means semester 2. Practicals, paper 4, cell biology. And then comes semester 3. And then comes semester 4. And now I think it comes semester 5. Semester 5, paper 11, that is general mammalian physiology, right? Here in enzymes, we had a point distribution and the right distribution and chemical nature. Distribution and chemical nature of enzymes. And another point was the general properties of enzymes, classification of enzymes. So another point is factors affecting the enzyme activity. And not this is another unit. Okay, so 1.1, the nomenclature and the classification of enzymes, IUPAC system. We have to the chemical nature of ये जो दिया हुआ आपका यहाँ पे classification of enzymes जो दिया है, that will be like now renamed as a nomenclature and classification of enzyme IUPAC system. Then basics of enzymology, definition, example of holoenzymes. Okay, apoenzymes, cofactors, definitions of examples of metal ions, coenzymes, okay, prosthetic groups. ये सब के बारे में आपको पढ़ना है. Earlier ये चीजें थी, but they were not mentioned clearly in the topics. So now they have made it clear that what are the points to be taken. So whenever whosoever is interested for making presentation, they can select from this particular file. ये जो points है, इस points में से कोई भी एक point उठाइए और आप अपना presentation बनाइए. Kinetics में बहुत सारी चीजें add हो गई है, पहले नहीं था ये सब चीजें. Kinetics के बारे में जिक्र भी नहीं था topic में. Enzyme activity लिखा हुआ था, factors affecting enzyme activity, that was all. It was written in the syllabus, but now they have mentioned very exclusively what are the points which are needed to be studied. So Michaelis-Menten MM equation भी है, equilibrium के बारे में भी है, और उसके बाद ये क्या है? This is Lineweaver Burke curve के बारे में भी पढ़ना है. What is that curve? What that curve signifies? What indications it gave for a chemical reaction, so that we would understand the biokinetics of any enzyme in the metabolic pathway of systems. Okay, so ये कुछ चीजें ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा in the स्टडी मटेरियल में आपको डाल दूंगा. ठीक है, तो जो टॉपिक सेलेक्ट करने वाले जिन बच्चों ने नाम दिया है, जो सोच रहे हैं कि हम सोचते हैं अभी कौन से टॉपिक, इनमें से कोई भी छोटा, ये जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इस पोर्शन में से कोई भी छोटा सा एक टॉपिक भी आप ले सकते हो. And you can prepare a presentation of even of 3 slides or 5 slides, but they should follow a pattern of presentation that I would tell when you come up with your presentations. Okay, ठीक है. इसके अलावा पोलिंग के अलावा भी कोई और भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो he or she can come up and write a message in the chat box of the app, so that हमें पता लग जाएगा, फिर मैं उनको अलॉट कर दूंगा. बट ये सब के लिए 1 महीना समय है आपको. अक्टूबर में विल स्टार्ट. एनीवेज, so let us come back to our first topic, that is enzymes. Enzymes के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. We'll have just a little bit of introduction. हाँ जी. सर यूनिट 2 में से भी चूज कर सकते हैं ना टॉपिक? हाँ, यूनिट 1 यूनिट 2 से. यूनिट 2 के बारे में कुछ यहाँ पे करेक्शंस नहीं है एक्चुअली रिवाइज्ड में. ये मेरे ख्याल से फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके बाद ये देखिए 3.4 आ गया, यानी कि 3rd यूनिट से है. तो जो करेक्शंस जो है सिर्फ 1st यूनिट में ही है,
जिसको आपको कंसिडर करना है। सेकेंड यूनिट का कोई भी टॉपिक आई डोंट थिंक है। 1.4 के बाद सीधा 3.4 पे चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चला गया। ठीक है, एनीवेज, तो आप यूनिट 2 से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक को, उसके भी सब टॉपिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाइए, नॉट अ बिग जी प्रेजेंटेशन। सर। आपको पूरा टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक पढ़ाने के लिए हम हैं, बस ये आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको हम क्लास सेमिनार देने के लिए कहते हैं। सभी लोग देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यू ऑल वुड गेट टू नो। ठीक है, अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन देना, हाँ, प्रेजेंटेशन अपना अक्टूबर में करेंगे, या फिर मतलब अभी नहीं करना है ना? अभी नहीं करना, अभी आप प्रिपरेशन करिए, उसकी कलेक्शन करिए। ओके सर। कुछ डाउट रहा तो मुझसे पूछिए कि मैंने ऐसे बनाया है सर, इसको कुछ करना है क्या, चेंज करना है क्या, व्हाटएवर। ठीक है, एंड मेक इट Okay, sir. एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा नया करिए कहीं से। आई नो कि गूगल पे आप प्रेजेंटेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट, ट्राई योर ओन स्टफ, कलेक्ट करिए मटेरियल को, द मटेरियल रिलेटेड टू योर टॉपिक, इसको कलेक्ट करके अपने खुद से बनाइए। डोंट राइट टू मच ऑफ टेक्स्ट ऑन द प्रेजेंटेशन, ये कुछ चीज़ें हैं। एंड एट द एंड आपको कंक्लूजन भी करना है आपके प्रेजेंटेशन का, और एक छोटा सा एक और पॉइंट, एक और स्लाइड रहती है, वो रेफरेंसेस। आपने चीज़ें कहाँ से ली है? आप रेफरेंसेस में गूगल नहीं लिख सकते, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप जिस साइट पे जाते हैं गूगल पे सर्च करने के बाद जिस पेज पे विजिट करते हैं, उस पेज के बारे में बताइए कि मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है। ओके, डोंट राइट www.google.com, that's a search engine, it's not a it is not a resource site. Okay, यस सर, थैंक यू सर। okay. नाउ मुझे कोई बताएगा कि अभी तक का जितना हमने 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितना कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बेसिस पे कैन एनीबडी टेल मी हाउ डू यू डिफाइन एंजाइम? So enzymes are protein catalysts or biocatalysts. They alter the rate of the reaction without participating in the reaction. They do this by reducing the activation energy of the reaction. Okay, so as you said, they are the proteinaceous in nature, and they are called biocatalysts. They reduce the activation energy, and they do not participate in the reaction. But what type of reactions they do? For example, the metabolic reactions of the body, they participate in that. Yeah, that's what you have to tell, because they are termed as biocatalysts. That means catalyst means it's altering the rate of reaction of some chemical reaction. So when they are altering the rate of reaction, so how does they do? Like what kind of reaction? Do they alter the reaction speed outside the body or inside the body? They do it inside the body. They do not participate in the body. Of course they participate, but they do not alter any product or reactant combinations. उसमें से किसी को भी change नहीं करते हैं. They come out as they were in the earlier stages. जैसे वो रिएक्शन में एंटर करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं, उसी फॉर्म में वो वापस बाहर आ जाते हैं। वो अपने आप को किसी और से रिएक्ट करके कुछ और फॉर्म करने में मदद नहीं करते। बट देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज एट विच वी कॉल ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट। हर एंजाइम जब किसी से रिएक्ट करता है तो खासकर बॉडी सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वी कॉल इट एज सबस्ट्रेट. Substrate means there is a substance on which an enzyme would act upon. The product, the substance on which an enzyme would act upon in a biological system, that is called substrate. So enzymes are nothing but the proteinaceous, mostly, primarily proteinaceous compounds in the biological systems, which usually catalyze the rate of reaction of मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उनको ऑल्टर करते हैं। जैसे आपने बाहर पढ़ा होगा। अच्छा, अब बायोलॉजी को छोड़ के केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटलिस्ट का एक डेफिनेशन कोई बताएगा? Anybody? So substances that alter the rate of a reaction without undergoing permanent change in themselves.
ओके, यही मतलब है। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरेशन? Altering the rate of the reaction means they reduce the activation energy so that the reaction takes Speed place in a itself. faster manner. Okay. Okay. Can they do not reduce the reduce the speed of reaction? They can also reduce some. They alter. They may reduce also sometimes. That's what alteration means. Usually they reduce. Sorry, alteration means they may reduce or they may increase. That means they can elevate or they can elevate. So both the ways they can change the rate of reaction. So normal Yes. catalyst is like that. But in biological systems, you usually do not find any of the enzymes which usually reduce the rate of speed of reaction. ऐसा आपको कोई भी एंजाइम नहीं मिलेंगे जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के रिएक्शंस को स्लो डाउन करते हो। स्लो डाउन करने का या फिर रोकने का या फिर कंप्लीटली स्टॉप करने का एक ही रीजन होता है, देयर आर फीडबैक मैकेनिज्म्स इन आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं, यानी कि किसी एक रिएक्शन को एनहांस करना है तो भी एक फीडबैक मैकेनिज्म है, और किसी रिएक्शन को हमें स्टॉप करना है या फिर स्लो डाउन करना है तो उसके लिए भी एक फीडबैक मैकेनिज्म है। बट एंजाइम इटसेल्फ डज नॉट डू दैट। एंजाइम यूजुअली इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, एंजाइम जो है जिसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, वो यूजुअली स्पीड अप ही करते हैं रिएक्शन को। एंड वंस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज अचीव्ड, एक प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उस एंजाइम के थ्रू वो यदि अचीव हो गया तो इट गिव्स ए feedback message, and then the reaction is stopped with the help of some other compounds which might be called as inhibitors, modulators, or there are different terms, regressors. There are different terms which are given to those compounds which usually reduce the production, or which usually leads the enzyme to stop behaving their action, and they stop acting upon the substrate so that we get products in as a result. So that way, तो alteration जो है हमारे normal chemical reactions में we have catalysts which can alter either way to complete the reaction, but in biological systems it's usually elevating, बढ़ाने का ही काम करते हैं, स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। लो एक्टिवेशन एनर्जी रहा तो लेस एनर्जी के यूसेज से वो रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अभी आप देखिए, सपोज किसी रिएक्शन को स्लो डाउन करना है, तो स्लो डाउन करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को या तो इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, या फिर एंजाइम की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स बाय व्हिच अ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, एंड ये जो रिएक्शन को रिड्यूस करने के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो यदि हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज करेंगे तो सोचिए कि इफ एट ऑल दैट एंजाइम हैज टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी यदि बढ़ाने वाला कोई कंपाउंड रहा बॉडी में, तो सोचिए कि हमारी जो एनर्जी जो कि प्रेशियस कंटेंट है बॉडी का, वो बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब क्या है कि इट्स फॉर एक ऑप्टिमम रिएक्शन करने के लिए सपोज करिए कि 2 यूनिट लगते हैं, तो आप यदि उसको स्लो डाउन करेंगे तो आपको 3 यूनिट लगेंगे, तो यू आर वेस्टिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनर्जी। सो इट इज नॉट फीजिबल, इट इज नॉट कोई काम की चीज नहीं है। फीजिबल ना होने के कारण इसको अवॉइड किया गया। तो ओनली जो कैटलिस्ट हमारे बॉडी में काम करते हैं वो एनहांस करते हैं कि 2 यूनिट यूज कर रहे थे तो हम 1.5 यूनिट में काम कर लेंगे। सो स्पेंडिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी and getting the reactions done, or getting the reactions and metabolic processes done. So it's like that. So enzymes are nothing but the catalysts which usually modulate the rate of modulation of word. What is the modulation? What does modulation mean? कोई बताएगा? To alter or change. नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं बोलना। ऑल्टर एंड चेंज, ऑल्टर आ गया तो मतलब तो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकता है। कैसा है कि हम ऑल्टर जब वर्ड यूज करते हैं तो हम दोनों तरीके से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं।
मॉड्यूलेट करने वाला ऐसा होता है कि एक प्रोसेस हो रही है, एक प्रोसेस चल रही है, उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि हम उसको इन्हांस कर देते हैं, फिर उसके प्रोडक्ट्स के बेसिस पे एक फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है और हम फिर वापस अपना काम रोकना शुरू कर देते हैं। मॉड्यूलेशन और ऑल्ट्रेशन में फर्क है थोड़ा सा। Alteration can be either on positive or the negative side, but modulation is only the increment of the process which is going on, और उसको कम नहीं करना उस एक्टिविटी को। जैसे कि अभी 10 मॉलिक्यूल लग रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम 8 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 0 मॉलिक्यूल के इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेस रुक जाएगा, बट इट विल नॉट गो इनटू द नेगेटिव साइड। तो यूजुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस हमेशा मॉड्यूलेट किए जाते हैं। एक नॉर्मल पेस से चल रहे थे, एक एंजाइम के प्रेजेंस में वो मॉड्यूलेट होके इंक्रीज हो गया था, सो दैट प्रोडक्ट्स कैन बी अचीव फास्ट अवे। ओके, so these are the biocatalysts usually of proteinaceous in nature, primarily of proteinaceous in nature, with the help of some cofactors or without, विद एंड विदाउट। कभी कभी किसी कोफैक्टर्स के प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं, कभी कभी किसी कोफैक्टर्स के एब्सेंस में भी काम करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दोस कोफैक्टर्स में कुड बी एनीथिंग। वो आयनिक कंटेंट हो सकता है, या कोई दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई कार्बोहाइड्रेटिक एंड हो सकता है, या फिर कोई फैट लिपिडिक मॉलिक्यूल, मोइटी बोलते हैं हम, लिपिडिक मॉलिक्यूल हो सकता है। लाइक दैट एनी अदर मॉलिक्यूल विच वुड trigger the action of any enzyme to catalyze the reaction are called cofactors. So enzyme is nothing but biocatalysts which are primarily of proteinaceous in nature, which can act upon the substrate on which they have to act, which can act upon the substrate on which the enzymatic activity has to be done, that which can act upon the substrate with or without any cofactor to modulate the rate of reaction of that particular metabolic process। एक particular metabolic process के rate of reaction को increase करना या modulate करने में जो substance use होता है with or without any cofactors, जो कि primarily proteinaceous in nature है, उसे हम कहते हैं enzymes। ठीक है, अब enzymes के activities को, the type of substrate on which they act upon, तो substrates के जिस पे वो act करते हैं, वो substrate के nature के हिसाब से हमने enzymes को discriminate किया, categorize किया है। तो we would see in further classes, further discussion हम देखेंगे उस चीज़ को। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले क्लास में जब फ्राइडे को मिलेंगे। अभी तो एडमिशन प्रोसेस थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है, still the process is going on, but we are not that held up as we were held up in the last week, so classes हो नहीं पा रही थी, but now on we will continue our classes। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ के आइएगा कि एंजाइम्स के फिजिकल और केमिकल नेचर, यदि आप पढ़ सकते हैं, कहीं से नेट से देख सकते हैं, ये भी टॉपिक आप ले सकते हो। फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स एक टॉपिक ले सकता है कोई, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स वो भी एक टॉपिक ले सकता है कोई, नॉट द होल। बड़े बड़े टॉपिक ना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशंस के लिए, स्मॉल प्रेजेंटेशंस करिए, एंड देन we'll go for the presentations in next month। चलिए, that's all for today, we'll see you on Friday। okay, Friday it's 12 o'clock। Thank you, sir. Okay, thank you।